Shani Khan, and next to me I've got Arya Babu, and today we are going to talk about this channel जिसको आपने अभी ट्यून ऑन किया, and it is the CBI Movies channel. और इस चैनल को क्यों बनाया है और किस किस के लिए बना है ये भी बताते हैं. बना तो सबके लिए है कि उसमें कुछ चंद लोग हैं, there are particular people where we going to hit to make it and open a particular platform. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਿਆ ਬੱਬੂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ CBI ਮੂਵੀਜ਼ ਚੈਨਲ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ चलें पर उससे पहले ये बताते हैं let's actually give a bit more history about yourself to our viewers. मैं सब तो पहला तबला सीखा कुलदीप सिंह मथारू मेरे उस्ताद से उन्होंने तो तबला सीखा उस तो बाद फिर मैं सोचा कि तबले वाले दी कोई इन्नी कदर नहीं तो फिर मैं गाना सीखा जो कि पंजाब दे एक बहुत बड़ी हस्ती क्लासिकल सिखाव दे जे बहुत बड़े बड़े गाउन वाले उन्होंने को सीखे प्रोफैसर BS नारंग और वो म्यूजिक सिखाते भी रहे DAV कॉलेज जलंधर दे विच वो इत्थे हर साल आउंदे सीगे तो 25 साल मैं उन्होंने को क्लासिकल म्यूजिक सीखा फिर मैं बहुत सारे जिहड़े इंग्लैंड दे विच आर्टिस्ट है उन्होंने नाल काम किया उन्होंने नाल मगर उन्होंने लैके जाना दिखा लेना बहुत उन्होंने जड़ी बहुत उन्होंने साथ दिता लेकिन की होया कि मैं 2 गाने किए एक हुण मेरा गाना जड़ा रिकॉर्ड किया तो वो मैं बहुत सारे अपने यारा दोस्तों जो कि बहुत मशहूर है दुनिया दे विच उन्हों का नाम है उन्होंने पूछा कि दूसरा आ मैं गाना किया सुनो सुन के सारे कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सारे जिहड़े आर्टिस्ट है चाहते बहुत सारे आर्टिस्टां ने क्या गाना बड़ा अच्छा भाजी तुसी इन्ना अच्छा गाउंदे हाँ तो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ किते पता नहीं शायद ये सोचते होंगे किते साडे तो गां ना निकल जाए इदां दी तो कोई गल ही नहीं हैगी संगीत एक ऐसा प्यार हैगा जिहड़ा वंडन वाला हैगा बिल्कुल एंड दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली कि भाई हम किसी को बुरा नहीं कहते कोई ऐसी बात नहीं है पर बात आती है कि जब किसी के ऊपर जो चीज़ बीत रही होती है वो उसी को मालूम है एंड आई थिंक वी ऑल आर समहाउ समवेयर एन आर्टिस्ट एंड एवरीबॉडीज गॉट दैट you know the person where you want to do something. The same thing is as actually a professional जो ये actually professional background से आ रहे हैं और खुद सिखाया भी है और अपने जो कहते हैं शागिर्द को आगे जाना हो आगे जाए भी तो उस्ताद को तो खुशी होती है या फिर आपके साथ जैसे दोस्तों में होता है तो दोस्त आगे बढ़ रहा है तो जो पक्का दोस्त है उसने तो खुशी होना है बट क्या करें अब दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है कोई कहता है कि ये मुझसे ज़्यादा खा ना ले या मुझसे ज़्यादा कुछ ले ना ले तो इसलिए हमने सोचा कि ये CBI मूवीज़ चैनल जो है इसमें हम चाहते हैं कि जिसमें कोई ऐसा फनकार है कोई भी ऐसा कलाकार वो जो आर्टिस्ट है वो हम जो चाहते हैं यहाँ जो YouTube चैनल है CBI मूवीज़ का YouTube चैनल इट्स फॉर यू ओके एंड यू आर यू नो अ सिंगर and you have got actually you know गाना आपने बनाया है कोई भी ऐसी कंपोजिशन की है तो उसमें ये है दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म और इसको आप सब्सक्राइब करें और हमारे पास आप आएँ और बाकायदा you know send your you will get all the details that we were going to say and we'll get it to you and then get in touch with us at the same time एज अ प्रोफेशनल कि आर्य बाबू जो हैं वो आपकी इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं कि आपको अपने आप को और पॉलिश करना है तो जिन जिन लोगों को इन्होंने कह लें सपोर्ट की है द बैकग्राउंड यू नो सिटिंग देयर और जिन जिनको जहाँ जहाँ लेके गए हैं वो जर्नीज जो हैं वो एडवेंचर्स जो हैं वो भी आपके साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल में
हम एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करेंगे. सो वीव गॉट लॉट्स ऑफ स्टोरीज, जैसे मोहम्मद रफ़ी जी के लेजेंड्स जो हैं, और आगे आकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं. और इनफैक्ट हमारे साथ जो यहाँ पे ऐसे लोग कुछ शामिल हैं जिन्होंने कुछ आर्टिस्ट को आगे भी बढ़ाया, उनकी भी जर्नीज हमारे साथ हैं. जस्ट टू एक्चुअली टेल आवर व्यूअर्स कि भाई द बैकग्राउंड जो आपने बताया, सो इज इट एक्चुअली फ्रॉम इंडिया और यू बीन द यूके ऑल योर लाइफ? No, I have been in the UK all my life. मेरी ऑलमोस्ट पैदाइश ही यहाँ की है. मैं 8 साल का था जब मैं यहाँ आ गया. मुझे ना हिंदी आती है, ना पंजाबी आती है, ना उर्दू आता है. मैं बोल देता हूँ, ये भी बोलने के लिए भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है. माय फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश. पंजाबी तो क्योंकि घरों में बोली जाती है, तो इसलिए पंजाबी मैं बोलता हूँ. लेकिन पंजाबी भी मेरी गुलाबी पंजाबी है, जैसे आपने ड्रेस पहना है. चलो, अच्छी बात है, गुलाबी हो पर शराबी तो हो ही जाती है गाना सुनकर. नहीं, बहुत अच्छा. चांदी, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि आप कहाँ से आए, क्यों मेरे से कनेक्शन हुआ, क्या 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 आपने मुझे इतना इंस्पायर क्यों किया, क्या आपने देखा मुझ में कि आपने सोचा कि इसको इंस्पायर करूं? I think you're yourself an inspiration. तो ये ऐसा है कि okay, for me myself, I don't like talking about myself. That's people who knows me to know. But चले बताना पड़ता है. वो ये है कि कुछ बड़ी बात नहीं है. So जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान का है, और फैमिली बेसिकली फ्रॉम लाहौर, कनेक्शन है अमृतसर के भी. सो कह सकते हैं कि भाई एक जो हमारे कहा जाए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलाप है, आई थिंक वो भी एक चीज़ हमारे अंदर आई है. तो बट आई हैव बीन एक्चुअली आई एम लिविंग हियर इन द यूके. It's more than 20 years. उससे पहले I've been actually all my life in Germany. So schooling, nursery, everything. So when I came here, it was a different journey. और बहुत प्यारी जर्नी. बट इसके साथ साथ जब हमारी मुलाकात हुई, वी गो वे बैक, इट वाज एक्चुअली इन द बिगिनिंग व्हेन आई केम, सो नियरली आई थिंक वेल ओवर 15 years हमारी मुलाकात हुई. और यू नो बहुत प्यारी मुलाकात हुई थ्रू अ वेरी एक्चुअली डियर म्यूचुअल फ्रेंड. तो which we are very glad to have met at that time. एंड इन बिटवीन जो था कि आई वॉज फॉलोइंग, इनके गाने आते थे, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए जब भी कभी मुलाकात हुई. बट कुछ साल पहले जब इस एक कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक टर्न, देयर इज अ टर्न इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. क्योंकि ऊपर वाला जो बैठा ना, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, वो एक ज़ात है, वो जो किसी वजह से हमें इकट्ठा करती है. बट हमें इसलिए नहीं इकट्ठा करती कि हम किसी उस मज़हब की वजह से अलग हो जाएं. वो इसलिए करती है कि हम लोग आगे बढ़ें. और ये कुछ लोग हैं, कुछ इस चीज़ को नहीं समझते. I had to bring this in because religion is something which brings us together. It's very personal, but it's not there to divide us. And I think this is exactly from a Muslim background, from Pakistan, actually also Indian background, Christian faith, and we have actually that multicultural everything together. और जो म्यूज़िक है, it's the language of love, प्यार के बारे में है और कैसे हम उसको मिलाते हैं. And I can thank my great father for my the family background, the upbringing, to be very multicultural and multi-faith in that way. And so I have seen this, and I think the connection when I was listening and heard your voice, so every time नए गाने आए सुनने को आए. But then when I heard the stories, what Arya Bogu was actually giving other people the chance to come forward, I thought it's time for you, it's time for him, and then of course to show there's so much potential, and it's good that he's sharing it with others and helping others to actually to get there where they want to.
बट ये है कि एक उस्ताद जो है ना पीछे नहीं रहना चाहिए, उसको भी साथ साथ चलना चाहिए, और ये कोई रेस नहीं है. So that's one reason as well, where I thought, let's do something. And of course, we have done, before, already some projects, and that song as well. Yeah. And then for me, besides that, probably many people don't know, but working in the public sector, working in a prison establishment as well. So उसके साथ balance जो है, I've been doing the media, working in the media, doing events, hosting events, and also as a radio presenter as well. And acting is another thing which I have been doing, and doing it more, and now coming into direction, and to create more and more. And I think, as I said, for me, our passion, both of us, is to bring people together, and at the same time not to forget about ourselves. And I think this is it. But the fact that you are a hidden gem, what people actually don't know. And I think there's one a very important thing to add on. When the songs or something's been, actually people start hearing it, इनकी जब आवाज़ सुनी तो लोग कहेंगे, ओ आप इतना अच्छा गाते हैं. तो ये है कि एक किस्म का इनको एज अ टीचर देख लिया, बट एज अ सिंगर वो नहीं. सो इट कम्स इन ब्रैकेट. तो जो ब्रैकेट में है ना, एज अ सिंगर, हेयर आर्य बाबू, दैट्स व्हाट वी वांट टू ब्रिंग अप मोर. या थैंक यू. एक मैंने फिल्म का म्यूजिक दिया था, एक इंग्लिश फिल्म का, तो उसमें एक गाना था मोहम्मद रफ़ी का. जी. क्या हुआ कि वो जो फिल्म थी वो बनी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई. तो मैंने म्यूज़िक उसका सारा कंप्लीट किया, गाना भी कंप्लीट किया. तो उन्होंने मुझे गाना वापस दे दिया. तो कहते जो तू करना इहदे नाल कर ला, तो असी तो हुण फिल्म इत्थे ख़त्म कर दित्ती आ, भी तुसी जो कुछ करना. तो वो गाना मेरा ख्याल एक साल शब पे पड़ा रहा. तो That's what we meant. That's when I was When we said, yeah. I said to her, look, there's a song that I've done, right? It's a live song. It hasn't been recorded in the studio. It was recorded in a hall with musicians, right? You want to hear this song? And she said, okay, I'll listen to it. And she heard the song and she said, no, you got to do something with it. So that's when the whole journey, project and the journey started from that particular song. And that song, of course, when we were thinking the storyline and everything, तो उसको कैसे क्रिएट किया, ये भी जो है ना, अभी आप थोड़ी देर में ये देखेंगे. And we looked for it's just again a story behind, in a story is another story. And जो डांसर थे हमारे पास, जिसने बहुत अच्छा actually gave that little, the crème, the little what do you call it, crème de la crème. the little ambience. Yes, to the us is Sonu Chand, and we're very thankful for Sonu Chand actually to give the art. She's a dancer, she's a singer as well, and I think it's very good. I want actually the listeners, now we're gonna put that clip into it now and listen to the song Mujhe Ishq Hai Tujhi Se by Arya Babu, and directed by myself, and this dancer is Sonu Chand. Yeah. Let's listen to that. Yeah, what the song is recorded alive, right? I must tell them this is what the director of the film wanted. He wanted that raw feeling in the song. Yeah. So he didn't want it that studio recorded song. Yeah. So that's why it sounds quite raw. But but that's the song itself. That's the song itself. Yes, but then when we did the videography, that was totally different. Now, as I said, listen to the song, and it's about Mujhe Ishq Hai Tujhi Se. मुझे इश्क है तुझी से
मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी. So the songs, when it comes to songs, so say, you tell us Kibi, what type of songs we have, and you yourself, because you have actually आपने different तरह के जो songs हैं किए हैं. It's not only Bollywood. या No, Hindi. बॉलीवुड मैंने क्रिश्चियन सॉन्ग भी किए हैं. मैंने रिकॉर्ड कंपनी है SM रिकॉर्ड्स UK, उनके साथ मैंने दो क्रिश्चियन गाने किए हैं. मेरे प्रभु यीशु जी मैनू तेरा सहारा, मेरे नीवा हो के शरण विच आजा, ताइयों ते बेड़ा पार लंघना. We are not limiting this channel just to film songs and Bollywood songs and stuff like that. All sorts of music can be played on this channel. Right? Okay. We're looking for people with a good voice who've got understanding of a little bit of understanding of music. The rest we can actually help them to promote them, right? To make them understand how it can be done better. Yes. And just to actually add on that if it comes to record the song, to record it, when you're in the UK, actually this can be arranged as well, isn't it? Yes. Yes. Yeah. So we can get a really good package in that. Yeah. So आपने ये कहा कि religious songs भी थे. आपका पहला जो religious songs आपने कहा है जो SM Records के साथ, which one was that? तेरा सहारा. तेरा सहारा. I know it's one of No, my favorites. Very wonderful. जरा सुना दे. Let's. मेरे प्रभु यीशु जी मैनू तेरा सहारा, पुल के भी पुलाना मैं तेरा सहारा. Beautiful. I've always been a great fan of Muhammad Rafi, as you know. Muhammad Rafi, I've met Muhammad Rafi 5 times in the UK. And one particular time, there is a radio presenter that you know, Muhammad Ayub. Yes. He was a pioneer of Asian music in the United Kingdom. Oriental Star Agency. And he's standing on one side, Muhammad Rafi is standing just opposite me, and his wife is on the other side. This is September 1979. So I was young, very young, and very shararati. I just went up to him and I said, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. So what he did, he put his hand in his pocket, took his wallet out and took a £5 note and signed it and dated it. Yes, right, wonderful. Which is very precious to me. So just a month ago, I saw Muhammad Ayub at an event, and he reminded me, and he said, do you remember the time that when you sang in front of Muhammad Rafi? I said, I do. I also remember when he gave me the £5, जब उसने मुझे £5 दिए, तो I'm telling everybody, I must be a better singer than him, so for him to give me £5. But was there, I would like to know, the reaction. So आपने वो गाना सुनाया, at the same time he just reacted and got the £5 note out, or was there any communication कि भाई उन्होंने कुछ कहा या ऐसा सोचा या उसने कुछ? अपनी वाइफ को बोला, बड़ा शरारती बच्चा है. That's all. That's वो तो अभी भी हैं, so don't worry about that. तो ऐसा बोल के तो उन्होंने मुझे ऐसे किया, तो £5 दिए, तो क्योंकि उनका टाइम हो गया था स्टेज पे जाने. And you still got that piece? Yes, we do have. Have you framed it? Or? It's not here. It's at my
my mum's house. Okay, we'll frame it and we'll show it as well. Yeah, I we think. will. Yes. So, one of these days we will get Muhammad Ayub to come Yes. onto the channel, and he can actually explain a little bit Talk a better bit more. than Yeah. talk a little bit more about what actually happened. Because I was very nervous because meeting a A legend. legend, yeah. Muhammad Rafi was such a big legend, Yeah. and meeting him and talking to him Yeah. was absolutely exceptional for me. And also to sing, I was very nervous. It's not like the way I'm singing now. I was very nervous. My voice was very croaky as well, right? But it's the love and affection. He was such a wonderful man. He was such a wonderful man. He was a great human being. I mean, he's not the only person that I've actually come really close with. Nusrat Fateh Ali Khan, I've come very close to him. We've had some fantastic times, and he was such a gentleman. He was such a gentleman. Okay, these are say कभी जो आपने हिंदी में गाने हुए या से, लेकिन what about पंजाबी में भी कम नहीं है. So you have some or there's a Punjabi particular song, I think. Yeah, मैंने एक किया composition गाने की. सानू सजना वे तेरे नाल प्यार हो गया, तैनू वेख्या ते रब दा दीदार हो गया. सानू सजना वे तेरे नाल प्यार हो गया. ये जब मेरे उस्ताद आते थे यहाँ, तो कई चीज़ें कंपोज करके दे के गए हैं मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंपोज की. एक गाना मुझे एक इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंस का यूके में रहने वाला था, उसका नाम चौहान था. उनका गाना मैंने अभी कंपोज किया है, तो देखेंगे पंजाबी का. Has someone else given it to you? He was an Indian correspondent, but he wrote a lot of songs. He written for Nusrat as well. He's written for Ghulam Ali. Has sung his songs as well. There's quite a few songs that he's written. There's one that he but maybe So next time. what was just to obviously let's give more even the depth and insight. So how old have you been when you actually felt, okay, singing is something I want to do? I have been singing for such a young age, right? But there comes a point in somebody's life when songs become more meaningful. Yeah, okay. I listen to a lot of sad songs, because in somebody's life something happens, and then you take up music. Music is your inspiration. It's a way of getting expression. I think it's also to mention that music is a therapy. Therapy that it helps to people to come out of depression, anxiety, and so is this any art, whether it was music, singing, dancing, acting. People actually underestimate the power of that when you have it, and it's not necessarily कि भाई आप उस चीज़ के साथ मशहूर हो जाएं. It's about you. आपके अंदर की जो रूह है उसको क्या चाहिए. At the same time, attached, I think, with the love of God, also very important, because faith is your rock, but it actually shows you, what path you have to go. And having this, and आपने ये बताया कि भाई the sad songs and sad moments. It's sad to say sad, but it is what it is, that someone actually is so down, and it's a hold. कभी उन्होंने एक चीज़ को ऐसे ग्रिप दे दी कि उस चीज़ के साथ वो आप दोबारा आप अपने आप को ऊपर लेकर आए.
So we have got that is religious songs या किसी भी लैंग्वेज में हो, तो जैसे पंजाबी हो, पंजाबी तो चलो आप पंजाबी में भी कहते हैं, क्योंकि आप जस्ट रियलाइज दैट आई हैव नॉट एक्चुअली मेंशन दैट हमें भी पंजाबी आती, मैं पंजाबी च भी कह सकनी कि तुसी किसी भी बैठे हो, किसी भी कोने च बैठे हो, पाकिस्तान इंडिया बैठे हो, तुसी उत्थे पंजाबी बोल रहे हो तो पंजाबी च तुहानू सोचोगे कि ए लगी हुई है बस उर्दू ते इंग्लिश पट माल है, नहीं ऐसी गल कोई नहीं है। ਅਸੀਂ पंजाबी च भी गल कर लवांगे और ਇਹ लोग कहांगे कि ਤੁਹਾਡੇ दिल के अंदर ਤੁਹਾਡੇ मन च ऐसी कोई चाहत है कि भी मैं अपनी आवाज़ सुनानी है किसी को, या कोई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ऐसा एक सोचे कि मैं गा कर अपने चाहने वाले नो या चाहने वाली नो या किसी भी, तो एक चीज़ नो एक तोहफा देना अपनी आवाज़ च सुनाकर इस प्लेटफॉर्म च इस चैनल नाल राबता करो। यूट्यूब चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ और आओ और सब दसो ਅਸੀਂ इस चीज़ ਨੂੰ पूरा करांगे। हाँ। ठीक है। चांदी जी वो जो ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਉਹ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਵਿਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਵਿਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਟਾ ਵਾਦਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਕਾਟਾ ਵਾਦਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਵਿਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ, ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਦਿਲ, ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ, ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰਵਾਇਆ ਦਿਲ। वंडरफुल। मैं तो क्लैपिंग नहीं आज की थी सोच के कभी कौन हाँ चलो वंडरफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। चलो ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ whatever languages हिंदी पंजाबी उर्दू कोई शायरी होवे, सॉन्ग्स ने तो सॉन्ग्स भी किसी तरह के हो सकते हैं, वीडियो शूट है किसी तरह भी हो सकता है, ਤੁਸੀਂ अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे ने, लव सॉन्ग्स हो, फाइट सॉन्ग्स हो, एक्शन सॉन्ग्स हो, we have got everything here, and as I said we can bring it over to you when you obviously get over to us. That's the whole thing. Anything else we want to cover up? No, I think the clips ये भी एक मौका है just to give you a little bit breaks in between that you will have seen, and you will get to see the religious songs of those clips as well, which are by the great SMM Records, उन्होंने बनाया है, और वो भी बीच में आपको दिखाए जा रहे हैं और आपको ये आइडिया हो जाएगा. सो you've got actually a wider picture, wider understanding that CBI Movies YouTube channel जो है, it's not just a channel, it's a versatile like R.A. Babu or we are sitting here very versatile people and the team. ऐसा भी हो सकता है, मैं कैसे जाऊं पानिया भरन मोरी मटकी, मैं कैसे जाऊं पानिया भरन मोरी मटकी, पकड़ कर पटकी झटकी मैं ना अटकी, मैं कैसे जाऊं पानिया भरन मोरी मटकी. क्लासिकल भी आप भेज सकते हैं, हम सुन सकते हैं. हाँ? I told you everything is here. क्लासिकल हो, जैसा भी हो, डांस भी हो, तो उसके पीछे म्यूजिक भी डाल सकते हैं. बड़ा ख्याल भी हो, बड़ा ख्याल भी हो आग लागन दे 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 महाराज कुंवर के, ऐसे बड़ा ख्याल भी हम भेज सकते हैं हमें, तुम सुनेंगे. Now we have covered actually I hope everything, just to probably to I repeat think it again. Yeah, I think can you just mention
the short movies, the reels. Yes. So we have, if you have a short movie or reel which you think that needs to have more actual promotion, more needs to be get out to more viewers and more people, that here is the right platform for you. And I mentioned it earlier on. If it comes to singing, गाने की कोई भी हो, आपका किसी तरह भी classical हो, pop singing में आए, and even rap, Punjabi rap इतनी हो रही है. तो वो भी you can actually get it here. Short films, and we do it ourselves. You want to create something, we are here for you. And reels, उसमें है कि बहुत reels आजकल है, when if you say TikTok हो या कुछ हो, लेकिन we can merge everything. So whatever you have when it comes to bring it out to the social medias and to the wider people, this is the right platform. Okay? Anything? No, I think you've covered everything. ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ. Exactly. It is for you. And yes, you want to be on the channel with an interview, we will do it. And if we can't be like, अगर जैसे physical तो साथ बैठ के नहीं कर सकेंगे, तो you know that. Social media is just like as we can meet everywhere on this platform, and then we will send you the link and we can have an interview as well. So chances जो हैं, it's really such a wide range. I think there's probably nothing which is not impossible, isn't it? It's nothing. Yes. Media has created such a platform for people that wherever you are, Yes. wherever you are in the world, we've got good links in Canada as well. Very good links. Very good links. We've got very good links in Pakistan, Yes. India, Australia, America, Bangladesh Sweden, as well. Germany, Germany. right? So this is your platform. Come and Germany. take advantage. Yes. Wenn ihr jetzt in Deutschland seid und ihr könnt mich hören und verstehen, also da könnt ihr auch mit sein. Er kommt jetzt von Pakistan, India oder wie auch immer, aber seid und lebt in Deutschland, hier, CBI Movies. Da könnt ihr auch mit dabei sein, kein Problem, okay? Thank you. Thank you, Jandi. That's it. So, welcome back. Now just let's continue about the CBI Movies YouTube channel. The CBI ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਯੂ ਸਟਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? Okay, what we're expecting here is कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म जैसे शुरू में बताया, इट्स फॉर एनी आर्टिस्ट. सिंगर है, सिंगर से मुराद ये है कि भाई उन्होंने शुरू किया है, अपने गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए जब आपका नाम नहीं है वो आपकी एक्चुअली कलाकारी को नहीं देखते, वो देखते हैं कि भाई यू नो हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव एंड हाउ यू आर योर सोशल मीडिया एंड व्हाट यू प्रॉब्ली ऑलरेडी डन. एंड CBI मूवीज़ का यूट्यूब चैनल जो है वो आपको एक्चुअली ये कहता है, इट्स इन्विटेशन. You send your video to us, you get in touch with us, नंबर भी नीचे आया है और ईमेल एड्रेस भी है, तो आप हमारे साथ रब्ता करें, हमें कांटेक्ट करें और हमें क्लिप भी भेज दें एंड ये कहें कि भाई ये आपका सॉन्ग हो गया, दिस इज़ व्हाट यू हैव डन एंड वी आर हैप्पी टू प्रमोट यू, टू ब्रिंग दैट एंड प्ले इट ऑन आवर चैनल. सो यू हैव हियर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने आप को दिखा सकते हैं. और उसके साथ साथ इन्होंने मेंशन किया कि भाई इवन एक्टिंग हो, सो बिसाइड्स दैट शॉर्ट मूवीज़ में वीडियो शूट्स जो हैं
वो भी हम आपकी हेल्प पूरी कर सकते हैं. So we can fulfill that dream that you thought, okay, I'm having this song, but I want to have a video shoot on that, a little story. If you don't have a story, even that's what we can provide. We'll listen to the song and we will help you to create a story for that song. So basically ये एक ऐसी आपके लिए इस बास्केट में आपके लिए सब कुछ है. So you've got the spices, you've got everything, where we are here to help you and support you to get there where you want to be. और फिर ये है कि आपको इसमें से ये होगा कि कोई भी पिक कर सकता है, देख सकता है, सुनेगा, तो probably you will be getting someone else will be getting in touch with you. So that's what we try Yeah, to do. that's what we are trying to do, to promote you, your dream. Because my dream was to teach people, right? I never thought I wanted to become a singer, but what happened is circumstances drawn me to it, to create this channel, because because I'm an unknown. I've always stayed in the background of people, other people, famous people, right? And it did give me the highlight that I should have got many years ago. So this is what we are doing. We're creating a platform and an opportunity for you to come and share your experience or your song, your poster, whatever you want to send us. We will look into it and we will contact you, and then we'll give you the feedback how we can promote your song or whatever you need from us. And now songs are videos. You have to watch the song. You don't need to listen to the song. You have to watch it. So we will help you to do videos for the song, do a storyline for you. This is the perfect platform for young people. बहुत सारे लोग आते हैं रियलिटी शो में, दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता उनका. तो आपके पास कोई गाना है तो हमें भेजें. Actually, we would say not only for young people, you need to be young in your heart. So for कोई भी किसी भी आप उम्र में कहते हैं उम्र के हिस्से में है, तो आपके मन में ऐसी ख्वाहिश थी कि you want to come up and sing and bring it out. Maybe आपके अंदर कोई ऐसी लाइफ में जो होगी जिसको आपने गाकर सुनाना चाहते हैं. This is possible as well. So he's a composer as well. तो composition, songwriting, जो भी हो, we have actually, as I said to you, this basket is a really big one. तो उसमें सब कुछ है जो आपको मिल सकता है, जो आप चाहते हैं, और उसमें हम लोग ये कर सकते हैं आपके लिए. नंबर जो है आपको ये दे देती हूँ 07946764503, जैसे आपको नीचे स्टेप में लगा हुआ है. एंड देन द ईमेल एड्रेस इज cbimovies1@gmail.com. What else have we to offer? Well, there is we've almost covered everything, right? Now, if you have any questions, you can either send us an email or you can actually phone us and get advice on how to rectify what you need. Or you want to send us a clip, by all means, on CBI Movies, the email address, or you can actually talk to us how we can actually get whatever you need from us on the phone device. And that is worldwide. ओके, चाहे आप बांग्लादेश में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, तो वैसे ही यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं और आपके लिए देखें, ये है मिलान, एक मिलन. और I will be straightforward here as well. It sounds sometimes bitter, but we do not actually encourage anyone who thinks it's just selfish. It's about you. That's what we're here for. But at the same time, it's about us. So we help each someone and we should help each others as well. तो charity, कहते हैं ना, charity देनी है तो you find to show it if you give the charity to some other people. But when it comes where you look around, कि charity starts at home. So home क्या है? It's the whole world. Not because we live in the UK or I'm from Germany and he's living here or someone else. So wherever you are at this moment of time,
you can get in touch with us, and we will try, our best. If not, probably we have someone else we can pass you on, and that's there. But you have to be genuine, okay? And we have got also, of course, our people, they're sitting on the board. They will check certain things if it doesn't sound in the right way, to be honest, because it's about bringing together and not breaking each other's. All right, I think that's all for today. We will be coming up again and again, and of course, if it's your song, your journey, your adventure, and then we will welcome you and also having you with us, and we'll have an interview as well. Okay, from my end, चांदनी खान की तरफ से वो भी अभी और एपिसोड्स में बताएंगे कि for myself what I have been doing, and my collaborations, and of course people who have been in my journey, उनको आपके साथ भी जरूर मिलाना होगा, और इनके साथ जो जर्नी है वो इनके साथ। बहुत आपको पता है दुनिया तो अभी बहुत छोटी हो गई, मीडिया के थ्रू इतनी छोटी हो गई कि जैसा कहीं भी किसी वक्त आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ। तो आइए हमारे साथ कनेक्ट करिए, तो हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। We want to thank here our family members and our supporters in our big production line. We've got Venus Alexander, we've got the support of our cameraman, and of course his editor, which is his son, and we've got Michael with us, and behind the camera, I say Michael, hi. And we've got, of course, another upcoming celebrity which will be done with us, my other half, which was going to be Sunny Singh, this other house, Venus Alexander, our family, but at the same time, people sitting on, on that particular board for you, for all of us. It's a shame we haven't got the right sound system, isn't it? Yeah, it is. So but it's just to see, your art by playing the harmonium. But I think if you probably just sing the song without it, would that be possible? Yes, I can So we hear the classical as well. We hear the classical song of you at Bollywood. We had actually, Punjabi as well. So right. anything different? I can try. 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, हम दूर नहीं तुमसे
कहने को जुदाई है, अरमान भरे दो दिल, फिर एक जगह होंगे, 100 बार जन्म लेंगे. Absolutely beautiful. Thank you. Absolutely beautiful. This is about singing, but you've also acted, isn't it? Acting की है और वो movie कौन सी थी? I know that, but I want to hear it from you. It was a very short part because it was a film called Naam, and there was Double role. a double role, but he wasn't available, so I took that role just to come off the plane. I'm just coming down the stairs. You can hardly actually So- recognize who it is, because if you have a look at that is from one of the posters, which that picture was way back. So the movie Naam, and it was actually the double role of Sanjay Dutt. Yeah, Right. no, it wasn't a double role, just a standing. Just a standing, yes. Yes. And what was the where was it actually? Were you coming down somewhere or No, going no, somewhere? he leaves his house and he goes to live far away from his family because he's been a very naughty boy. So he's just coming down the plane, just stepping down. YouTube में. Okay. And you have actually, have you met him then? And No, he was not there. he wasn't available at the time, but we have met on a different occasions. I've had the opportunity of meeting him, but that's a long time after. So that's was just one of those things. But since then, I mean, I've always been inspired by entertainment, the arts. It's part of me. I think it's in my blood. It's not what I've done for a living, but it's just this is what is in my blood. This is. So actually coming from a total background, I know we haven't touched base that in the beginning. So you said professional background. Yeah, from an optical background, right? This is where my father was an optician, and we carried on that tradition. That is my background, right? But nobody in my family actually are into music at all. None of them. I'm the first generation of musician, but now there is one grandson. He's very much into music and arts as well. Wow. Okay. So does he also singing or is he playing? Well, there are bits and pieces of him actually singing. He once you give him a mic, he doesn't want to let go of the mic. Wonderful. See, and I think it's also another message to pass on. अगर आपकी family में कोई ऐसा है, यानी कि बहन भाई हो, बच्चे हो, and to support them as well, it's another reason where you can actually get in touch with us here at CBI YouTube movies channel. So you can get in touch for that reason as well. तो कोई ये नहीं कि आप ही खुद शायद आप किसी को support करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि भाई चलो, क्योंकि I tell you it makes a big difference. If you get the right support, we are here to support you. But if you want to actually support someone and say, okay, want to get in touch with us, so that makes it as well. As you know yourself, right? How inspiring is it when your wife is telling you to do this, right? Exactly. The last song, Yes. it wasn't my creation, Yeah. right? She inspired me to that I should actually record it and sing it and record it, right? It was nothing. Same with you. I mean, your husband is in films, and he's inspiring you to do. To do those things which are meant to be doing. Yeah, and sometimes actually what happens is sometimes people can't do it themselves, but they inspire other people to do it. Absolutely. Right? So we're actually inspiring you to take that leap, take that
one step and get in touch with us so we can actually move forward with this. And maybe, right, you might be the next Daljit Dosanjh. Why not? Why not? Exactly. Anything, anyone. Maybe, I mean, people like Sanjay Dutt or lots of Bollywood, Hollywood stars. Yeah. You could be the next big James Bond. It's just about to know, to be known as well. So we all are stars. Everyone is unique. Everyone has got their own talent and own, get the inspiration as well. But it's just about to be known with, everywhere, or at least, somewhere. And that sometimes misses out. I think it gives a lot personality. I come with an experience because I've had the knowledge. I've learned music. I can play the tabla, right? Maybe not as good as Zakir Hussain, but I mean, that's another thing. But I do play a little bit. I can accompany people. But once you're unknown, right? Nobody wants to know. Lot of the companies don't want to know. Yeah, that's the whole purpose and the reason for this platform, because nobody is easily giving you the chance to actually to be known. Yes, there are the people, I think, with this song contest and all this, but still then I think for just ordinary people as well, they just want to actually emphasize and get things out. That's the right platform to do so. See, छोटे पिंडां दे विचों इंडिया YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Yeah, and that's about the reels. आजकल देखा जाए, reels are happening and they're just so quickly out and people are enjoying it. And sometimes it's actually you think, ये क्या है? देखा जाए तो what is the meaning behind it? कोई meaning नहीं है, बस किसी को हंसा दिया, ठीक है, किसी को entertain कर दिया. And I think this is what we're missing out, the entertainment and in a healthy way. Very important, in a healthy way. एक लड़की छप्पड़ दे विच डिग जांदी, ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। Look at Mona Lisa. Yes, it just takes one bit. So as I said, people want to be known, and that's what we're going to make it happen. Try as much as we can, of course, and but you need to be with us. Subscribe करें, like करें और share भी करें, क्योंकि शेयर करने के साथ बंदा शेर बन जाता है। सही है ना? ये नहीं बोलना चाहिए। नहीं शेर तो बनना चाहिए, पंजा तो मारना चाहिए। पंजा जो है ना, वो पकड़ में जो आया ले लिया, पर दिस इज नॉट द पकड़ व्हाट वी वांट। वो ऐसी पकड़ हो कि जो है ना अपने प्यार के साथ, अपने लफ्ज़ों के साथ, अपनी हरकतों के साथ, अपने एटीट्यूड जो होता है उसके साथ एक पकड़ होनी चाहिए। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? संगीत जिहड़ा हैगा बहुत मिठा हैगा, और दूसरा संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक भगती हैगी। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। Yes. And also, as we said, we have covered, actually, I don't know if we have maybe left something, so is singing, is acting, and if you are a writer, even if you write a story, you have written a song, that's what you can send us as well. And we can make it livable in a way that put more motion and action into it, physical action as well, that जो आपने लिखा है उस चीज को एक स्टोरी बना के जो है ना आगे लेकर आए. So that's possible as well. बहुत सारे गाने लिखਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ किसी ਨੂੰ दे सकते, गवा सकते। I think to acknowledge, एक होता है ये acknowledge करना किसी की आर्ट को, किसी के effort को। I think I have been like I think that 9 years I have been managing a particular brand,
in the Culture Unite. I have been, also the host, but also as an event manager, and that like the award ceremony and UK Bhangra Awards, for example, and just being there for 9 years and seeing that people to acknowledge 24 25 different awards and 24 categories. तो उस कैटेगरी में हर तरह के सिर्फ सिंगर्स नहीं हैं, उसमें ये है कि जिसने प्रोड्यूस किया, जिसने द कंपोजर, द सॉन्ग राइटर, अक्सर होता है कि सॉन्ग राइटर के पता ही नहीं चलता. सो the value of that person who actually started off to bring it alive, that is what also has been missing out. So to be acknowledged and give the awareness and get that respect, that's also there. So you have a song or you have written a story and you just even a poem, तो जो वो poetry है उसको भी live करना, तो हो सकता है we've got particular actors in it, and we can actually have a play to that. I mean, for myself, I do plays, I do drama, so in movies. So maybe that is another like a new source of bringing a story together. Okay, so platform जो है बहुत बड़ा है, तो आप उसको और बड़ा कर सकते हैं. If you have even an idea where you think, hang on a minute, we want to have this as well. This is another special category, especially someone who is so talented in that. Here we are. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਸਾ ਚਾਰ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ. ਬਿਲਕੁਲ. Okay, and we just support for that. Yeah. And it's very very important again that you guys know where and किससे रब्ता करना है, वो तो बता दिया. अब इतनी इतनी प्यारी प्यारी शक्लें आपके सामने आई हैं और ये तो याद रहेंगी, ठीक है ना. अगर नहीं याद रहेंगी, मेक श्योर कि हमें भी पता है कि किस तरह आपको याद दिलाना. Okay. So make sure to subscribe our channel CBI Movies. As we said, it's for you. Subscribe करें, like करें और ये राब्ता रखें हमारे साथ. राब्ता पे पहले आइए तो राब्ता ऑटोमेटिकली भी रहेगा. So make sure you subscribe this channel and just be in touch with us. And you need to make a comment. Without your comments, we don't know what you're thinking. So please leave a comment on our channel, and we will take everything you put on there on the comments on board. Thank you. Yes, but comments में ये आता है, again as we said in the beginning, see, you have a choice. ठीक है, like people have the remote control in their hand and watching something on the TV, and if you don't like it, you can change the channel. That's fine, and you're not going to actually go and remove that channel physically. So at the same time, अगर तो है, क्योंकि positivity हमें सब लोग को चाहिए, कोई भी यहाँ पे नहीं बैठा. और I tell you honestly, if there's something negative or criticism होता है तो वो positive हो, उससे इंसान कहते हैं कि चलो we can work on that. But is anything negative? This world is so much negativity. We are here to spread love and peace as well. So we want to have positive. If it comes, don't. If you have nothing, just keep quiet. See, now we are actually, there's 4 countries here now, right? There's Pakistan, India, Germany, England. That's 4. Yes. And we've also got Canada, America, Australia, New Zealand. Right. 6, Countries. Already. 6, 7 countries Yes. where we're connected, where we can actually get your advice on how to do whatever you do. Okay. Thank Yes. you. So make sure to press the like button to subscribe and leave a positive comment. Okay. Thank you. Rana, Rana, Ranu, नजरिया
na